Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q2 and H1FY25 earnings conference call of Kamdhenu Group. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Satish Agarwal, MD and Chairman of Kamdhenu Limited. Thank you, and over to you, sir. Good morning and a very warm welcome to everyone present on the call. Along with me, I have Mr. Harish Agarwal, Group CFO, and Mr. Sunil Agarwal, Chairman of Kamdhenu Ventures Limited, and Strategic Growth Advisor, our Investor Relation Advisors. We have uploaded our results and investor presentation for the quarter and half-year ended 30th September 24 on the stock exchanges and company's website. Hope everyone had a chance to go through the same. Coming to our steel business first, India's steel demand is poised for significant growth, driven by ambitious production targets and robust government support for infrastructure. As per a recent Deloitte India and Indian Steel Association report, India aims to boost crude steel capacity to 300 million metric tons by 2030 and 500 million metric tons by 2047. In FY24 alone, domestic finished steel consumption surged by over 14%, mainly fueled by construction and infrastructure. Future projections estimate demand could reach 275 million metric tons by 2034. Underscoring steel's critical role in India's expanding economy and urbanization. After a challenging Q1, we are pleased to report a recovery of revenue growth for Q2, primarily driven by increased construction activities. Despite some regional flooding challenges, Q2FY25 revenue reached to 190 crore, reflecting a 3% year-on-year growth. With our volume sales saw a robust growth of 11%. We also witnessed robust sales volume growth from our own manufacturing facility of 8%. Revenue growth from our own facility has been low due to a fall in average sale price of TMT bars. With the government's emphasis on capital expenditure and substantial investment in activities and initiatives like Housing for All and other infrastructure projects, we expect an upsurge in demand for TMT bars in the near future. We also achieved significant improvement in PBT margins, which rose to 11% from 7.3% last year. Our brand reputation for quality and reliability continues to set us apart, attracting new franchisees and driving strong growth in royalty revenue, which increased by 11% to rupees 33 crore. This royalty revenue remains highly capital efficient, delivering substantial returns with major capital investment by leveraging our brand's strength. This performance underscores our ability to expand our franchisee network while consistently meeting customers' expectations for reliable products. We continue to see large growth opportunities due to several industry tailwinds, including a strong government push for infrastructure, which includes schemes like Housing for All initiatives and 11 lakh crore capex outlay for FY25, and lastly a shift of consumer preference towards branded construction material. To conclude, given the favorable dynamic
within our industry, coupled with our robust brand, unique asset-light model, and high-quality product offerings, we are well positioned to sustain growth going forward. Now, I would like to hand over the call to Mr. Sunil Agarwal to give you an update on the paint business. Thank you. Thank you, and good afternoon, everyone. I would like to give you a brief update on the paint business for the year gone by. India's paint industry is set for a steady growth, driven by increasing urbanization, rising disposable incomes, and a shift towards home and interior improvements across both urban and rural markets. Valued at approximately Rupees 75,000 crore, the industry is projected to expand a CAGR of 9.4%, reaching an estimate Rupees 1,25,000 crore by financial year 29. This growth is supported by demand from residential and commercial projects, along with government initiatives in infrastructure and housing. Additionally, the rising preference for premium product is gaining traction, alluding to the industry's potential for sustainable growth in the year ahead. During half one, financial year 25, our revenue reached Rupees 109 crore, reflecting a year-over-year degrowth of 14%. EBITDA degrew to Rupees 7 crore from 9 crore in half one of 24, with EBITDA margin of 6.7%, while we navigate challenges such as the shift in the sharp period from Q3 to Q2 and a heavy monsoon in the eastern region impacting demand. We anticipate a robust recovery in the upcoming season. Growth in rural demand, spurred by a well-distributed monsoon and our strong distribution network, is expected to drive the sales momentum. Our expansive dealer distribution network remains critical to our growth strategy, ensuring product accessibility across various markets. Building strong partnership with our dealers remains a priority, as these relationships are essential for enhancing the market penetration, particularly in semi-urban and rural areas. Our commitment to premiumization continues to fuel performance, as reflected in the increase of our average selling price per kg per liter from Rupees 58 in financial year 15 to Rupees 79 in half one of financial year 25, a growth of 37% over the year. Expanding our portfolio with premium and differentiated product allow us to meet evolving consumer preference, particularly the demand for quality and eco-friendly options. The strategy not only strengthens revenue but also enhances margin performance. With a comprehensive portfolio of quality product at competitive price, we are well positioned to meet diverse customer needs. Our sustained expansion, focus on innovation, and dedication to sustainability equip us to navigate the current demand environment and support our growth trajectory. Coming to way forward, we will achieve growth through both higher values and increased volume. To drive value, we are working on raising our average selling price by focusing more on premium, value-added products. For volume growth, we will expand further into regions where we have been building a strong dealer network. We are confident we can scale quickly by combining our unique dealer-driven model with the ability to offer a high-quality product at affordable price. We remain dedicated to serving the smaller, undeserved towns through our wide-reaching network of over 4,300 dealers. With the economy growing and strong government support for rural development,
We expect rising demand for paint products due to new infrastructure projects. We are excited about the path forward and are committed to delivering growth-driven improved profitability and cash flow conversion. To conclude, with a comprehensive portfolio of quality products at competitive price, we are well positioned to meet diverse customer needs. Our sustained expansion focus on innovation and dedication to sustainability equip us to navigate the current demand environment and support our growth trajectory. With this, I would hand over the call to our Group CFO, Mr. Harish Agarwal, for the financial. Thank you all. Ladies and gentlemen, the management line has been disconnected. Please stay connected. We shall reconnect them shortly. Ladies and gentlemen, the management line has been reconnected. Over to you, sir. Yeah. Thank you, sir. First, I would like to take you through the financials of the steel business. I would like to share the highlights for Q2FY25. Our steel volume from franchisee route has stood at 8.3 lakh metric ton in Q2FY25 compared to 7.5 lakh metric ton in Q2FY24, a year-on-year growth of 11%. Our steel volume from own manufacturing stood at 31,778 metric ton as compared to 29,398 metric ton, a year-on-year growth of 8%. Royalty income through franchisee stood at rupees 33 crore in Q2FY25 as compared to 30 crore in Q2FY24, a growth of 11% year-on-year. Total revenue stood at rupees 190 crore in Q2FY25 as compared to 185 crore in Q2FY24, a growth of 3% year-on-year. Our profit before tax stood at 21 crore in Q2FY25 as compared to rupees 14 crore in Q2FY24, a growth of 55% year-on-year. Profit before tax margin stood at 11% for Q2FY25, which was 7.3% in Q2FY24. Profit after tax stood at 16 crore for Q2FY25 as compared to 10 crore in Q2FY24, a growth of 56% year-on-year. Now, I would like to share the highlights for H1FY25. Our steel volume from franchisee route has stood at 17.1 lakh metric ton in H1FY25 as compared to 15.7 lakh metric ton in H1FY24, a year-on-year growth of 9%. Royalty income through franchisee stood at 68 crore in H1FY25 as compared to 62 crore in H1FY24, a growth of 10% year-on-year. Total revenue stood at rupees 375 crore in H1FY25 as compared to 394 crore, a degrowth of 5% year-on-year. Our profit before tax stood at 41 crore in H1FY25 as compared to 30 crore in H1FY24, a growth of 38% year-on-year. Profit before tax margin stood at 10.9% for H1FY25, which was 7.5% in H1FY24. Profit after tax stood at rupees 31 crore for H1FY25
as compared to 22 crore in H1 FY24 with a growth of 41% year-on-year. We continue to remain debt-free as on 30th September 2024. ROCE and ROE on an annualized basis stood at 28.9% and 22% respectively. Let us go through the numbers of Kamdhenu Venture Limited now. First, give you the highlight for Q2 FY25. Revenue for the quarter stood at 55 crore as compared to 66 crore in Q2 FY24, a degrowth of 17% year-on-year. EBITDA stood at rupees 4 crore as compared to 5 crore in Q2 FY24, a degrowth of 29% year-on-year. EBITDA margin stood at 6.3% for Q2 FY25. Profit after tax stood at 1.2 crore for Q2 FY25 as compared to 3.4 crore in Q2 FY24, a degrowth of 65% year-on-year. Coming to the highlight for H1 FY25, revenue for the H1 25 stood at 109 crore as compared to 128 crore H1 FY24, a degrowth of 14% year-on-year. EBITDA stood at 7 crore for H1 FY25 as compared to 9 crore in H1 FY24, a degrowth of 18% year-on-year. EBITDA margin stood at 6.7% for H1 FY25. Profit after tax stood at 3 crore for H1 FY25 as compared to 6 crore in H1 FY24, a degrowth of 50% year-on-year. Average selling price per kg/liter for H1 FY25 stood at ₹79. With this, I would like to open the floor for question and answer. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Rajesh Mangal Agrawal from Rajesh Mangal & Co. Please go ahead. Yeah, good evening, Sunil ji and all. I have some couple of questions regarding this paint business. You told in this during this presentation the paint business. Hope I am audible. Yes, you are audible. Yeah. You have told that the paint business industry is India is 75,000 crore. Okay. And our turnover in March 24 is only 292 crore. That is less than 0.5% of the total industry demand. So my question is, what all we are taking, what course of actions we are taking to improve this sale amount? Second question is regarding this, we have the dealer network of 4364. In H125, in your presentation, you have told that the total number of dealers is 4364, and whereas in financial year 2010, it was 3230. Only 35% we have increased the dealer network, only 35%. Hope this figure will not lead us for a better result. And third thing, in your presentation, you have given this, the total tinting machine is 1450 only, 1450 only, 1450. Okay. We have dealer network of 4364, whereas our tinting machine is 1450. That is near about 35%. So, and last but very panic thing is on 26th September, our share market price is 58 rupees, and today it reaches to 20 rupees, a degrowth of 67%. How like can myself like an individual investor will you say कैसे हम आपको कंपनी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं कि अपना कंपनी अपने को कुछ मुनाफा दे सकती है करके? प्लीज एलैबोरेट। क्योंकि आपने जो रेज किए हैं क्वेश्चन, एक ओवरऑल इंडस्ट्री का एक आपको दिया गया था फ्यूचर, और आज ओवरऑल इंडस्ट्री कहाँ पे है।
इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, एशियन है, बर्गर है, नेरोलैक है, इंडिगो है, शालीमार है, कामधेनु है, सबका अपना अपना मार्केट शेयर है। उसमें परसेंटेज का आप कैलकुलेट करेंगे कि 75,000 से अगर कामधेनु 292 करोड़ का है तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। अगर आप इसके और नीचे जाएंगे तो ऐसे कंपनीज भी हैं जिनका टर्नओवर 200 है, 150 है, 100 है। तो ओवरऑल मार्केट से हम सिर्फ ये लगा सकते हैं कि अभी स्कोप कितना और है अपने को इंक्रीज करने के लिए। तो हम लोग जैसे टारगेट अगले 4 साल का लेके चल रहे हैं विजन कि हम 1000 करोड़ करने वाले हैं। और जहाँ तक रहा आपका टिंटिंग मशीन का और डीलर नेटवर्क का, तो डीलर नेटवर्क हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, टिंटिंग मशीन भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। सभी डीलर्स के पास कोई भी कंपनी आज की डेट में टिंटिंग मशीन नहीं लगाती है। जहाँ जहाँ स्कोप है, जहाँ जहाँ पे लगा सकते हैं वहाँ लगा रहे हैं। दूसरा, टिंटिंग मशीन के अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, तो जहाँ से रेवेन्यू का एक्सपेक्टेड रहता है वहीं पे हम लोग टिंटिंग मशीन लगाते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग इंक्रीज भी कर रहे हैं टिंटिंग मशीन को। और जहाँ तक शेयर प्राइस का सवाल है, शेयर प्राइस तो मार्केट ड्रिवन रहता है। तो 58 रुपये था या 40 रुपये था या 20 रुपये है, इसके अंदर देखिए ये मार्केट ड्रिवन है, इसके अंदर तो हमारा रोल नहीं रहता है कोई भी। तो इसके अंदर तो जैसे पिछले दिनों भी कई शेयर होल्डर्स ने ये क्वेश्चन रेज किया था, हमारे पास ईमेल के थ्रू भी आए थे, हमने रिप्लाई भी किया था कि इसके अंदर मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कंपनी ने कहीं किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने एक्सचेंज में भी क्लैरिफिकेशन दिए थे, 2 लेटर भी लिखे थे, हमारी वेबसाइट पे भी है वो। तो शेयर प्राइस मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो शेयर प्राइस का लिए नहीं है। और जहाँ तक इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस का सवाल है और आपके थॉट प्रोसेस का सवाल है, इस क्वार्टर के अंदर कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस रहे हैं, जैसे फ्लड्स का रहा है कि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जो फेस्टिव सीजन है वो भी शिफ्ट हुआ है Q2 से Q3 की तरफ। और दूसरा, जो नए एंट्रेंट आए हैं मार्केट के अंदर, वहाँ से भी शेल का प्रेशर रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। और बाकी सब कंपनीज के, अगर आप पेंट कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे या सेल्स देखेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे बड़े प्लेयर्स की भी, तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स सभी की डाउन है। तो उसी के साथ हम लोग भी इम्पैक्टेड हैं। आने वाले टाइम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरह से रिकवर किया जाए। जो शॉर्टफॉल इस क्वार्टर में रहा है या पीछे क्वार्टर में रहा है, उसको हम कवर करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स हमारे कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे। सुनील सर, मेरी बात समझेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्री शेयर है बहुत ही छोटा सा है और हमें ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस है, वी हैव, ठीक है। और आप बता रहे हैं कि 4 साल में अपन 1000 करोड़ तक टारगेट पहुंचेंगे। आज के दिन पे अपन 274 करोड़ से हैं और 4 साल में वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज आवर सेल्स टू 3-fold, ओके। सो व्हाट इज योर क्राइटेरिया, व्हाट इज योर एजम्पशंस, हाउ दिस फिगर वी विल रीच? देखिए, ये हम लोग ने जो वर्किंग की है 1000 करोड़ का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, वो हम ऑन रिसोर्सेज लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे हम लोग जो ग्रोथ करने वाले हैं, चाहे वो मेन पावर है, चाहे हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे हमारे पास डीलर नेटवर्क है, जो हमने अभी पास में किया है उसके हिसाब से हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये जो टारगेट हम 4 साल का लेके चल रहे हैं, इसको हम 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात होगी, जिसे हम आज की डेट में जब तक टाई अप नहीं हो तो वो कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। तो हम लोग वो आपको कमिट करना चाहते हैं जिसको हम ऑन अचीव कर पाए। It's really very true. But sir, in my opinion, we should improve our dealer network also, and we are expending too much money in our advertisement also. We have such a huge celebrities for our advertisement. In your presentation, you have given so many actress name and names, details, etc. उसके बावजूद भी अगर अपना सेल्स का टर्नओवर अपने जो अचीव करना नहीं कर पा रहे, तो अपने को सोचने वाली बात है सर। डेफिनेटली हम लोग इस पर वरीड हैं और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग ब्रांडिंग के लिए भी काम कर रहे हैं, और जहाँ तक डीलर नेटवर्क का है उसके लिए भी हम लोग ने कुछ रिक्रूटमेंट किए हैं और डीलर नेटवर्क बढ़ाने पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। आपका सजेशन बिल्कुल अच्छा है सर, और इसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी करेंगे जैसा आपने पॉइंट आउट किया है।
ठीक है, थैंक यू सर एंड होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants, please limit yourself to 2 questions per participant. The next question is from the line of Riya Sharam from GT Capital. Please go ahead. Sir, your line has been unmuted. Please go ahead with your question. Mr. Sharam, your line has been unmuted. Please go ahead with your question. As there is no response from the current participant, we'll move on to the next question. The next question is from the line of Rohit from SK Securities. Please go ahead. कृपया लाइन पर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold. Ladies and gentlemen, the management line has been disconnected. Please stay connected. Ladies and gentlemen, the management line has been reconnected. The next question is from the line of Ashish Raut from PSM Securities. Please go ahead. Hello, good afternoon, sir. So I have a couple of questions to ask. So the first question is on the paint segment. So our dealer count has remained stable at approximately 4,360. Are there any specific challenges affecting the dealer network expansion for our business? हेलो. Yeah. नहीं सब चैलेंज कोई फेस नहीं कर रहे हैं इसमें. इनफैक्ट डीलर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर्स. लेकिन क्या है कि जो डीलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हम डी बोर्ड भी कर रहे हैं. तो ऑन बोर्डिंग भी और डी बोर्डिंग का दोनों प्रोसेस चल रहा है हमारा. लेकिन जो अच्छे डीलर्स हैं हम उन्हीं के साथ कैरी कर रहे हैं. तो नंबर ऑलमोस्ट आप सेम देख रहे हैं. लेकिन बोर्डिंग डी बोर्डिंग का प्रोसेस चल रहा है और आने वाले टाइम में हम इस क्वार्टर तक समझे फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग इसको 5,000 तक ले जाने वाले हैं. Okay. And my second question is on, can you explain the primary reasons for the reduction in ASP for TMT bar? Are there any specific markets or supply chain factors driving the same? आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप? Yes. Okay. Can you explain the primary reasons for the reduction in average selling price for TMT bar? Are there any specific market or supply chain factors driving this? No. Pricing, you mean to say pricing कम हो रहा है TMT बार का, उसका रीजन क्या है? Yes. देखिए मार्केट फोर्सेस रहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट को लेंगे या डोमेस्टिक को लेंगे. इसके 2-3 रीजन हैं जो प्राइसेस कम हो रहे हैं TMT बार के. एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हैं, दूसरा आयरन के प्राइसेस भी कम हुए हैं. तो ये दो, और थोड़ा सा जो है डिमांड सप्लाई का भी टेम्परेरी फेस रहा है Q2 के अंदर. जैसे फ्लड बहुत ज़्यादा रहा है तो उस टाइम पर थोड़ी डिमांड के ऊपर प्रेशर रहता है. अगर आप ट्रेंड देखेंगे, मैं स्पेशली TMT की बात करता हूँ, तो अगर Q1, 2, 3, 4, 5 का देखते हैं तो Q2 की सेल हमेशा कम रहती है क्योंकि बारिश का सीजन होता है. तो इसमें सेल के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है. तो इस दौरान में थोड़े प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट रहा है. लेकिन कामधेनु के ऊपर ये प्राइसिंग कम होने से या ज़्यादा होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है. हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है, रॉयल्टी है, वो हम पर टन बेसिस पर लेते हैं.
चाहे वो प्राइसेस टीएमटी के कम रहे या ज़्यादा रहे, हमारा क्वांटिटी बेस है। नंबर 2, जो हमारी अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर हम लोग 75% जो रॉ मटेरियल है बिलेट इंगट, वो बाहर से परचेज करते हैं। तो जैसे ही टीएमटी का प्राइस कम होता है तो इंगट बिलेट के प्राइस भी कम हो जाते हैं। तो हम लोग इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है। और रीज़न इसका सिर्फ यही है कि इधर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लड की वजह से, आयरन ओर की वजह से ये, और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी प्राइस है, स्टील प्राइस का प्रेशर है, ये डाउन है। लेकिन आने वाले टाइम में ये थोड़ा इम्प्रूव होने वाला है। Okay, okay, sure. Thank you so much, sir. All the best for next quarter. Thank you. The next question is from the line of Anisha Shah from K&Q Advisors. Please go ahead. Anisha. Hello. Thank you for the opportunity. I just had 2 questions in the paint segment. So, I wanted to ask what will be our target split between value and volume for the growth for. The line for the current participant has been disconnected. We'll move to the next participant. The next question is from the line of Atul Daga from Daga Securities. Please go ahead. Mr. Atul, your line has been unmuted. Please go ahead with your question. Hello? Yes, sir, you are audible. Yes. Hi, sir. I just had 2 questions in the paint segment. So could you share earnings guidance for the next 2 years, considering current market trends and strategic initiatives? For next 2 years? Hello? Hello, what do you want for next 2 years about the paint? Yes. Could you share earnings guidance for the next 2 years, considering market trends and strategic initiatives? In fact, we have made a road plan for next 4 years, and we are targeting to achieve the turnover of 1,000 crore from the present level, with a margin of around 15% EBITDA. Hello? Yes. Yes. Yeah. Will it be sufficient for you? No, sir. Got it. Sir, one more question I had. Kamdhenu Paints grows as a brand, right? So how are you tracking penetration in terms of market share, and what are your goals over here? Can you throw some light on this? For new? Sir, as Kamdhenu Paints grows as a brand, so how are you tracking penetration in terms of market share, and what are your goals over here? Can you shed more light on this? Yeah. देखिए, हमारा स्टील का ब्रांड जो है, जहाँ जहाँ स्टील का ब्रांड है हमारा, हम वहाँ पे अपने पेंट ब्रांड को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मोस्टली हमारा टायर 2 के अंदर है। अगर आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा हो तो हमारी मोस्ट ऑफ द सेल, अराउंड 80% सेल इज कमिंग फ्रॉम टायर 2 सिटीज। तो टायर 2 सिटीज में हमारा स्टील का भी प्रेजेंस बहुत है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वहाँ स्टील का कंजम्पशन होता है। और हमारा रिटेल सेगमेंट में स्टील बिजनेस है, तो रिटेल सेगमेंट पेंट का बिजनेस भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वही हमारा डीलर नेटवर्क है, स्टील का भी और पेंट का, तो उसी एरिया को हम पेनेट्रेट कर रहे हैं। Understood. Got it, sir. All the best. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Pooja Mehta from JC Securities. Please go ahead. Hi. So I had one question. With government initiatives like the Housing for All and increased capex outlay, how much growth in demand for TMT bars are we expecting in FY25? We are expecting 15% growth in the FY25 in terms of volume. Okay, got it. That was helpful. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Riya Sharam from GT Capital. Please go ahead. So your line has been unmuted, Mr. Sharam. Your line has been unmuted. Please go ahead.
Mr. Sharam, your line has been unmuted. Please go ahead with your question. As there is no response from the current participant, we'll move on to the next one. The next question is from the line of Anisha Shah from KU Advisor. Please go ahead. Ms. Anisha, Hi. your line has been unmuted. Please go ahead with your question. Thank you for the opportunity. Sorry, I got disconnected earlier. I just had two questions from the paint segment. So my first question was, what will be our target split between value and volume for the growth of the paint segment? The line for the current participant has been disconnected. We'll move on to the next question. The next question is from the line of Rohit Mehra from SK Securities. Please go ahead. Hello, I'm Yes, audible? sir, you are audible. Yes, sir. Yeah. Thank you for the opportunity, sir. My question is regarding the steel segment. So could you clarify the main factors contributing to the relatively flat brand turnover revenue, and how do you see this evolving in coming quarters? आप जो प्राइसिंग देख रहे हैं, वैल्यू जो टर्नओवर का देख रहे हैं, वो वॉल्यूम में देख रहे हैं, रुपीस में देख रहे हैं टर्नओवर की फॉर्म में. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ है. ऑन मैन्युफैक्चरिंग भी इस क्वार्टर में 8% इंक्रीज हुआ है, और अगर फ्रेंचाइजी नेटवर्क का देखें तो वो भी 11% इंक्रीज हुआ है. तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बराबर, लेकिन टीएमटी प्राइसेस कम हुए हैं. इसकी वजह से अब टॉप लाइन देख रहे हैं वो फ्लैट नजर आ रहा है. Got it, sir. That's it from my side. Thank you. All the best. Thank you. A reminder to all participants that you may press star and 1 to ask a question. Participants who wish to ask a question may press star and 1. The next question is from the line of Yug Modi from AP Capital. Please go ahead. Hello. Yes, I thank you for this opportunity, sir. Sir, just had one question. What specific steps are being taken to expand the dealer network further, particularly in the semi-urban and rural areas where demand is projected to grow? ये आप पेट के बारे में जानना चाहते हैं या स्टील के बारे में जानना चाह रहे हैं? सॉरी सर, ये स्टील के बारे में जानना चाह रहे हैं, डीलर नेटवर्क का एक्सपेंशन, या पेंट के बारे में समझना चाह रहे हैं? हेलो, करिए. Yes, sir, you are audible. हाँ, ये आप पेंट के Sorry, sir. Sorry to interrupt, sir. The current participant has left the queue. A reminder to all participants that you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Kamdhenu, who is an individual investor. Please go ahead. हाँ, बोलिए. Yes, sir. Sir, paint business में बहुत ज़्यादा there's a degrowth in terms of turnover and profit after tax. So as an investor, we are really worried about the going concern of the company. जी. तो कंपनी के क्या प्लान है, बिकॉज शेयर प्राइस जो है आपका 70% टूट गया है फ्रॉम द पीक से, एंड लोअर सर्किट हैपनिंग ऑन द डेली बेसिस. देखिए, एक तो आपने कहा कि गोइंग कंसर्न के ऊपर आप वरीड हैं, तो इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आज हमने बैलेंस शीट भी अपनी कल पब्लिश की है, तो आप बैलेंस शीट देख के उनके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं. देयर इज नो वरी एट ऑल अबाउट द गोइंग कंसर्न. हम लोग का 4 साल का प्लान भी हमने उसमें दिया हुआ है. तो ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट कुछ और बता रहा है. रिजल्ट कोई देख के मैं आपको, गोइंग कंसर्न इज ड्रिवन बाय बैलेंस शीट, नॉट बाय द P&L. You are referring P&L and asking the question on the balance sheet. So going concern, as a retail investor, sorry to interrupt, as a retail investor, for us the price of the share matters the most. We have invested the money for the growth of it, not for the erosion of it. Now, from the peak of the price, it has shattered by 70%, which is a great concern for a retail investor like me. Yeah, that's fine.
जो मार्केट का प्राइसिंग का फैक्टर है उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं रहता है। ये मार्केट फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, और कंपनीज का भी है, सेंसेक्स भी है। इसके अंदर कंपनी का कोई रोल नहीं है कि प्राइस कम हुआ है या शेयर का ज़्यादा हुआ है। कंपनी अपनी वर्किंग कर रही है, उसकी वर्किंग के ऊपर अगर मान लो किसी क्वार्टर में वर्किंग कम हुई है तो उसका क्या रीज़न है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे Q2 के अंदर अभी टर्नओवर हमारी लास्ट ईयर से कम हुई है, उसका हमने रीज़न एक्सप्लेन किया है। नए मार्केट में एंट्रेंट आए हैं, अभी मानसून बहुत ज़्यादा इस बार बारिश रही है, फ्लड रही है, जहाँ हमारा मेन रीजन है हमारा नॉर्थ में और ईस्ट में, जहाँ से हमारी मेन रेवेन्यू आता है, वहाँ के अंदर इस क्वार्टर के अंदर फ्लड एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर करीब 40% ज़्यादा रहा है। तो ये रीजन रहे हैं जिनकी वजह से सेल्स इम्पैक्टेड हुई है। लेकिन आप लास्ट ईयर की वर्किंग देखें और इस साल की वर्किंग देखें तो टर्न अराउंड कंपनी के अंदर आप देख रहे हैं। पास्ट में हमने लॉसेस किए थे, लेकिन अभी कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। टर्न अराउंड करने के बाद लास्ट ईयर भी प्रॉफिट रहा, इस साल भी हम लोग प्रॉफिट में हैं। मार्केट शेयर कम या ज़्यादा हो रहा है उसके लिए हम कुछ इसमें आपको बहुत ज़्यादा जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस है, मार्केट ड्रिवन है मार्केट और शेयर प्राइस। Thank you. The line for the current participant has been disconnected. The next question is from the line of Yug Modi from AP Capital. Please go ahead. Hello, sir. Sir, I just had two questions. Sir, what specific steps are being taken to expand our dealer network further, particularly in semi-urban and rural areas where the demand is projected to grow for our paint segment? Okay. So, देखिए, पेंट में जैसे आपको मालूम है कि पेंट में जो इंडिया में मार्केट है उसके हिसाब से अभी कंपनी का साइज बहुत छोटा है। अभी लास्ट ईयर भी हमने करीब 300-350 करोड़ की टर्नओवर अचीव की थी, और इस साल भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सरपास करके 10 to 15% की ग्रोथ इस बार हम अचीव कर पाए। हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हमारे पास सिंगल यूनिट है, जिससे हम इंडिया में जितनी डिस्टेंस तक कटर कर सकते हैं वहीं तक हम लोग उसको मटेरियल को दे पाते हैं। तो चूंकि प्लांट हमारा नॉर्थ में राजस्थान में सिचुएटेड है, तो हम नॉर्मली मैक्सिमम जो इंडिया में है वो साउथ में उड़ीसा या सेंट्रल इंडिया तक ही हम लोग अपना पूरा जो मटेरियल है वहीं तक दे पाते हैं। और जो स्पेशली कंपनी की स्ट्रेटजी रही है कि हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अपनी प्रेजेंस करके और डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं जो डीलर्स को हैं। तो उसी एरिया में जहाँ जहाँ जिस एरिया में कामधेनु की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है वहीं पे नए डीलर्स को हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं, वहीं भी डीलर नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि पिछले 6 महीने में मार्केट में काफ़ी डिसरप्शन है। 2-3 नई कंपनी पेंट के बिजनेस में आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबकी मार्केट में डिसरप्शन की एक स्ट्रेटजी रहती है जब स्टार्टिंग होती है। तो ये एक टेम्परेरी फेज है। आई थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के टारगेट हैं, जैसे हरीश जी ने पहले ही बताया कि हम अगले 4 साल में 1000 करोड़ की टॉप लाइन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से कंपनी काम कर रही है और उस पर हम लोग पूरा सर्च कर रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग अचीव कर पाएँ। Okay. Sir, lastly, could you share our target for adding franchisee capacity in FY25, and are there any new partnership in progress that will support this expansion for our steel business? देखिए, फ्रेंचाइजी भी जो आप देख रहे हैं कि लगभग हम लोग लगभग 34-35 लाख मैट्रिक टन TMT बार और अदर स्टील प्रोडक्ट्स हम लोग इस साल का हमारा टारगेट है, जो फिर H1 में हम लोगों ने पूरा अचीव कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जैसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, कामधेनु बीइंग ए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी, हमारी कोशिश रहती है कि मेरी सभी फ्रेंचाइजी और स्टेक होल्डर सब विन विन पोजीशन में रहें। तो हम लोगों का जो प्रीमियम है ऑल ओवर इंडिया,
जो 2,500 रुपये से लेके और 6,000 रुपये तक का प्रीमियम कामधेनु जो प्रोडक्ट्स हैं टीएमटी बार वो कमांड करते हैं। तो हमारा पहला फर्ज रहता है कि वो प्रीमियम मेंटेन करते हुए और जहाँ जहाँ डिमांड हमारे पास टीएमटी बार की बढ़ रही है या और स्टील प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, वहीं पे हम लोग फ्रेंचाइजी को एंटरटेन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा जो फ्यूचर की कैपेसिटी है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी हैं, वो भी अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी में इम्प्रूव कर रहे हैं और अगले 4 से 5 साल में ये कैपेसिटी हम लोग जो एग्जिस्टिंग इस समय 50 लाख टन के करीब है, इसको ऑलमोस्ट डबल करने का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, बट दैट इज ओनली थ्रू द फ्रेंचाइजी रूट। Perfect, sir. Sir, that answers all my questions. Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Thank you all. I would like to thank you everyone for being part of this call. We hope we have answered your questions. If you need any more information, please feel free to contact us or Mr. Devin Dhruva from SGA, our investor relation advisor. Thank you once again. Thank you. On behalf of Kamdhenu Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect.